Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today my dear students I am going to discuss sexual reproduction in plants. So let's move to the board. Sexual reproduction in plants. सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कंप्लीट किया है पोर्शन प्लांट्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, मीन्स के बोथ जो सेक्सेस होते हैं उनका फ्यूजन ज़रूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स involves the production of gametes which is also called as gametogenesis. Gametogenesis, that is sperms and egg cells. So one thing is the production of gametes and their fusion, मीन्स के एग और स्पर्म सेल्स का आपस में फ्यूज करना, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। एक को तो गैमेट्स का प्रोड्यूस होना यानी गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा फ्यूजन जिसे विच इज कॉल्ड एज दैट इज फर्टिलाइजेशन। और डियर स्टूडेंट्स, एक और आपको इंफॉर्मेशन देता चलूं, फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहते हैं। सिनगैमी मीन्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्लियर? या इसको सिंपली हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, दीज गैमीट्स means the egg cell and the sperm cells are produced in special structures in plant body. सो प्लांट बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इन गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स के एग सेल्स को और स्पर्म सेल्स को। डियर स्टूडेंट्स, हम दो तरह के यहाँ पर इन सेक्स ऑर्गन्स की बात करेंगे, दो तरह की प्लांट कैटेगरीज के अंदर। एक एंजियोस्पर्म्स, मीन्स द फ्लावरिंग प्लांट्स, and the plants other than angiosperms. डियर स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म्स और बाकी तमाम प्लांट्स जितने भी हैं अदर देन एंजियोस्पर्म्स, इनके अंदर
जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं उनकी मैं आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर मौजूद हैं एंड्रोशियम, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल reproductive organ, while gynoecium which is the female reproductive organ. And these androecium and gynoecium, they're only present in the flowering plants. The androecium produces sperms, while the gynoecium produces the egg cell. Now, the other kind of these specialized structures जिसके हम बात कर रहे हैं कि जो specialized structures हैं जिनके अंदर gametes बनते हैं वो other than these plants वो दो तरह के हैं। उसमें एक है antheridium, it is the male reproductive organ. It produces antherozoids or simply which we call as sperms और spermatozoids. इनको spermatozoids भी कहते हैं, antherozoids भी कहते हैं और sperms भी कहते हैं। Clear, students? So that is the antheridium. यहाँ पर flowering plants में वो है androecium. इस तरह से gynoecium और इधर जो female reproductive organ है that is called as archegonium. That is a female reproductive organ and it produces the egg cells. Clear, dear students? So ये तो इनकी specialized structures की बात होगी जिनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं these gametes. Now the major plant groups. So dear students, all over the world जो major plant groups है वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम major plant groups की बात करने वाले हैं. So major plant groups are number 1, mosses. Number 2, ferns. And number 3, the seed producing plants. Dear students, seed producing plants को spermatophytes भी कहते हैं. They are also called as spermatophytes. The seed producing plants, they are also called as spermatophytes. इनके अंदर further दो categories हैं. The seed producing plants, they are of two types. The gymnosperms which are called as naked
seeded plants. And the other category is the angiosperms, जिसकी हमने यहाँ पर बात की, angiosperms. So these are closed seeded plants. अब आप परेशान नहीं होंगे, मैं इसके एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि जिम्नोस्पर्म्स को नेकेड सीडेड क्यों कहते हैं और इनको क्लोज सीडेड क्यों कहते हैं। आगे चल के डिटेल्स भी आएंगी और मज़ीद डिटेल्स आप हायर क्लासेस में भी जाकर पढ़ेंगे इन सेकेंड ईयर। सो नेकेड सीडेड का मतलब है कि इनके जो सीड्स होते हैं वो इनके जो पत्ते होते हैं वो उनके ऊपर एक्सपोज्ड पड़े होते हैं। मीन्स कि इनके जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर ही इनके सीड्स मौजूद होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के। जबकि एंजियोस्पर्म्स के होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है या इनको फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि फ्लावर होगा तो उससे फ्रूट बनेगा। आगे चलकर हम इसकी डिटेल में भी जाने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इनके अंदर जो सीड बनते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं। जैसे कि आपने आम खाया होगा, आम का जो बीज होता है वो गुठली कहाँ पर होती है, वो उस फल के अंदर होती है। सेब के जो बीज होते हैं वो भी उसके फल के, यानी सेब की जो पल्प होती है उसके अंदर होते हैं। तो इस तरह से जितने भी फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके जो सीड होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं विद इन द फ्रूट। सो दैट इज व्हाई द एंजियोस्पर्म्स दे आर कॉल्ड एज क्लोज्ड सीडेड प्लांट्स और दे आर आल्सो कॉल्ड एज द फ्लावरिंग प्लांट्स। इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। और एक चीज़ डियर स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर होगा तो उससे फ्रूट बनेगा। उसकी डिटेल्स क्या हैं अभी इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर्स के अंदर आपको इनकी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। सो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, फर्न्स एंड मॉसेस, सो दीज आर द मेजर प्लांट ग्रुप्स। मॉसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ डियर स्टूडेंट्स, दैट बिलोंग्स टू डिविजन ब्रायोफाइटा। While these two groups, ferns and the spermatophytes, they belong to division Tracheophyta. Dear students, जो प्लांट्स होते हैं उनकी दो मेजर डिविजन्स हैं, दो, एक जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं और एक जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स मतलब जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, उनको हम कहते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स या फिर उनको कहते हैं ब्रायोफाइट्स। उनमें मॉसेस हैं। वैसे तो उनकी और भी तो कैटेगरीज हैं, लेकिन मेजर ग्रुप्स में मॉसेस हमारे पास मौजूद हैं। और दूसरी डिवीजन है ट्रेक्योफाइटा। ट्रेक्योफाइटा या ट्रेक्योफाइट्स ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स मौजूद होता है, उनको कहते हैं ट्रेक्योफाइट्स। So they are the ferns and the seed producing plants. Clear? अब हम बात करते हैं dear students, the methods for the fusion of egg cell with sperm cells। यानी इन मेजर ग्रुप जो प्लांट ग्रुप्स हैं हमारे पास, इनमें किस किस तरीके से जो एग और स्पर्म सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं, मतलब कि फ्यूज कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इन मॉसेस एंड फर्न्स। सो डियर स्टूडेंट्स, मॉसेस और फर्न्स के अंदर द स्पर्म्स आर मोटाइल। इनके जो स्पर्म्स होते हैं दे आर मोटाइल। मोटाइल का मतलब है दे कैन स्विम, दे कैन स्विम। तो डियर स्टूडेंट्स, स्विमिंग किस में होती है, तो समझ गए होंगे वाटर के अंदर। सो मीन्स दे नीड वाटर फॉर fertilization. So they can swim in water and they need water
in the form of rain or dew drops. तो रेन की शक्ल में, यानी बारिश जब पड़ती है तो तब उनको वाटर प्रोवाइड किया जाता है, और उस वाटर में स्पर्म्स जो होते हैं दे ट्रेवल, they are motile, they can swim in water and they need water for in the form of rain and water to travel to the female sex organ in which egg cell is present. और फिर उसके बाद जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, और जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से न्यू प्लांट. सो दैट वाज द मेथड ऑफ फ्यूजन in egg cells and sperm cells of mosses and ferns. Now the second category is the spermatophytes. In spermatophytes, so dear students, what are spermatophytes? The seed producing plants are called as spermatophytes. It means the gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms and angiosperms, they are called as spermatophytes. So dear students, इनके अंदर जो ये फ्यूजन का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है. They have got pollen tube. They have got pollen tube for the safest transfer of sperms to the female gametophyte. मीन्स कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचाने के लिए इनके अंदर अल्लाह ताला ने इनको दिए हैं pollen tubes. So they are not dependent on water for fertilization, as the mosses and ferns, they need water for fertilization. So dear students, यहाँ पर स्पर्मेटोफाइट्स की डेफिनेशन याद रखनी है. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के हवाले से भी जो जनरल टर्मिनोलॉजी है ये भी आपने याद रखी है. ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इन प्लांट्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.